Okay, so Ayan, let's proceed ahead with your snap for BARC, and that I'm going to take two subjects for you, like strength of material and fluid mechanics, right? Yes. You're good with that? Okay, okay, sir. Okay, That is one of my favorite favorite within subjects. five. Both of these two, Yes, within five subjects, I have kept them. both of them, right? Yes. Okay, great. Now tell me, Ayan, what do you understand by fluid? Statics and dynamics and kinematics. That classification. So fluid means that is a substance when you apply the external load that will Mm-hmm. it will flow continuously. Mm-hmm. And by the term dynamics, it is a part of mechanics, which is concerned about the motion with considering the forces causing it. Mm-hmm. And kinematics means we are concerned about the motion only. We don't consider the forces. And, Mm-hmm. and statics means that we are analyzing any structure or any other thing which is at rest. That is statics. Okay, can you give me some example where you get statics also, dynamics also, kinematics also? Through some example, can you please explain me? तो फ्लूइड में तो तीनों ही होता है. फ्लूइड रेस्ट में भी होता है, तभी एनालाइज करते हैं फ्लूइड हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. और kinematics means the vortex and all, that is kinematics. And dynamics means we use the momentum, that Okay, momentum let's part. take this way. I'm giving you reservoir. Yes. And I'm to produce electric power through the water, hydro power plant. Now give me example of statics, kinematics and dynamics. Yes, sir. By the static energy of it means the pressure energy, or then it is, if we make a orifice or holes in the bottom, then it will convert into kinetic energy. The water will exit with a velocity. Then it can hit a turbine. Then by the impact, the turbine will start moving, and from that mechanical energy we can produce electricity. Now at the bottom of the reservoir, there's a pipe. Yes. Which is called penstock. Penstock. Now as I go along the length of penstock horizontally, yes. Tell me, will the pressure be same or change? The pressure will be changed. Change, huh? How? Yes. But Pascal law says that same level, same pressure, no? And that is static in case of it is flowing. So how should you calculate the pressure if I give you 2 points in penstock? Point 1, point 2 in the penstock. Let's say 10 meters distance. So you take a penstock and there is a point A, point B, gap is 10 meters. So how shall you find out the pressure between these 2 points? So we can, by energy equation, using the energy Bernoulli's equation, we can know that. You have to calculate the head load. Now this penstock is a uniform cross section area. Yes. So velocity will be same at these 2 points. So velocity will be same. Yes. Datum is same. If datum is same, then pressure will be different. No, datum is same, velocity is same. As per Bernoulli equation, why pressure will be different? So Bernoulli's energy equation, we can, because it is the ideal flow, there will be some viscous effect. So how shall you find pressure difference? That is my question to you. Can you draw the diagram? Draw a diagram of penstock, point A, point B, horizontal penstock pipe. It is a horizontal pipe. Hydraulic gradient sign. We can. No, you draw the diagram and tell me how to find out pressure difference. PA minus PB. So can you use the manometer or something like? See, manometer you can measure. Manometer will reflect the difference in pressure. But otherwise also without manometer,
How can you calculate? That is my question. Pressure gradient. So if we calculate the head loss by Darcy's law, we can calculate the pressure difference. What is that equation? SL V square by 2 GD, where F is the Darcy's friction factor. So how friction factor will you take? How shall you take the friction factor? Friction factor 64 by RE, that is the value. And what is the Reynolds number you had to take? If it is laminar, then 64 by RE. If it is, how do you know it is laminar or not? So we have to calculate the Reynolds number, rho VD by mu. If it is less than 2000, then we can use the 64 diameter by you RD. know, density you know. How shall you know the velocity now? Velocity by the height of the reservoir, we can get the. There is some height of the reservoir. Any other way? Easy way? Pitot tube, can we use? Any other continuity equation? Continuity equation is also used to measure something. Discharge. Discharge. How shall you measure discharge now? Discharge we can measure by area into velocity. Centurimeter or. You go to the exit of the pipe. What is the trouble? Exit से discharge तो तुम्हें पता लग जाएगा ना, as engineer. Exit से discharge आ रहा है तुम्हारे पास. Yes. पेन स्टॉक के exit पे discharge तुम्हें पता है. Area तुम्हें पता है. Discharge over area is the average velocity. Yes. Average velocity तुम्हारे पास आगे Reynolds number पता लग जाएगा. Yes. And normally this velocity is going to be laminar category only, you know, because turbulent flow होता नहीं है. It is going to be laminar. So Darcy equation से तुम्हें pressure difference पता लग जाएगा. Right? You mentioned something about a hydraulic gradient line. What was that? So hydraulic gradient lines means we plot the piezometric head with length of the pipe. And what is energy gradient line? If we plot the total head, total energy through the length of the pipe. Achha, you know, there is something which is called potential and gradient lines. Potential line and stream lines. Potential line and potential function, stream function, right? Yes. So what is the significance of these? So potential function means it is a scalar function whose partial differentiation give the velocity component. Actually, if any flow has to occur, then there should be some potential difference, like electricity, right? Some potential difference should be there for any flow to happen. So here potential gradient should be something there, so that the flow can happen. Can you give some example of streamline and potential lines? Streamline and potential. Yes. The flow, seepage flow. So below a dam or any structure, if there is a seepage flow, there will be some potential line or stream line. Okay, if I give you wash basin, yes. जहाँ पे हाथ धोते हैं ना wash basin, yes sir, उसमें stream line और potential line के बारे में कुछ बताओ. Sir, what? That is a free vortex. आप ये बताओ उसमें फ्लो होता कैसा है, कैसा चलता है फ्लो? Flow outward to inward. Vortex flow.
नहीं, डायरेक्शन क्या होती है? So it is actually Streamline is the line. If you draw tangent on that, you get a direction of direction. velocity. Direction. Yes. अब सोचो जरा कैसा फ्लो है, आपने बोला vortex फ्लो है. स्ट्रीमलाइन, हाँ, वेलोसिटी का डायरेक्शन पता चल. हाँ. एंड स्ट्रीम फंक्शन मींस तो स्ट्रीमलाइंस कैसी होंगी इसमें? सर्कुलर लाइन. सर्कुलर होंगी. एंड पोटेंशियल लाइंस? पोटेंशियल रेडियल. Potential lines will be radial. Can you give me some example where potential line is circular and streamline is radial? If there is some radial flow. Give example. सर इफ स्विमिंग पूल में सर नीचे जब वाटर को क्लियर करना पड़ता है स्विमिंग पूल में. Think of some fluid machineries. मशीन सर सेंट्रीफ्यूगल पंप में हो सकता है. वॉल्यूट केसिंग जानते हो आप क्या होता है? वॉल्यूट केसिंग. यस, वो शायद पंप में यूज होता है, पंप और टरबाइन में, मतलब फ्लो को एक डायरेक्शन में लेने के लिए. वॉल्यूट केसिंग होता है ना, पंप और टरबाइन में वॉल्यूट केसिंग ही तो होता है. उसमें जो आपका फ्लो है वो बेसिकली क्या होता है, तुम्हारा रेडियल होना स्टार्ट हो जाता है. और अगर तुम देखोगे प्रेशर डिफरेंस है उसमें. प्रेशर लाइंस जो है वो आपकी लाइंस है और उस तरीके से आपका फ्लो बनना स्टार्ट हो जाता है. राइट. सेंट्रीफ्यूगल पंप है, टरबाइंस है, उसमें फ्लो कई तरह का होता है. तुम्हारा रेडियल फ्लो होता है. रेडियली पंप में क्या होता है? रेडियली इन आउटवर्ड फ्लो है. रेडियली आउटवर्ड फ्लो. एंड टरबाइन में रेडियली इनवर्ड फ्लो. Pressure is more outside and pressure is less inside and flow is radial. That is turbine. And pump में flow is radially outward. It is thrown outside. You know what is cavitation? Yes sir. Yeah, can you define that? सर जब किसी भी कोई मतलब पॉइंट में प्रेशर वेपर प्रेशर से भी नीचे चला जाता है तब बबल्स बनना स्टार्ट होता है. बबल्स जब फूटता है तब मतलब पाइप वॉल में रटिंग और पिचिंग होने का चांस है. So can I say cavitation phenomena is just like boiling? Can I say that? Yes, kind of. What is vapor pressure? Vapor pressure means liquid जो लिक्विड रहता है उसका पार्ट, उसका वेपर जब उसके ऊपर जो वेपर रहता है उसको प्रेशर देता है, वही वेपर प्रेशर होता है. मतलब इक्विलिब्रियम में. और कौन कौन से डिवाइसेस में कैविटेशन होता है? वेंचुरीमीटर में हो सकता है. मतलब लोएस्ट पॉइंट जो थ्रोट है, थ्रोट में प्रेशर. थ्रोट के ऊपर या थ्रोट से अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम? थ्रोट के डाउनस्ट्रीम में जब जाएगा तब पॉसिबिलिटी ज्यादा है, बिकॉज प्रेशर ज्यादा है तो बबल फूट सकता है. व्हाई एट थ्रोट ओनली? सर बिकॉज द प्रेशर इज लो देयर, मतलब क्रॉस सेक्शन कम है तो वेलोसिटी ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा. व्हाट अबाउट अदर डिवाइसेस? सर पंप में हो सकता है, पंप में हो सकता है और टरबाइन में भी हो सकता है. एक टर्म होता है पंप में, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड. बता सकते क्या होता है? आयन वो कितना मतलब वल्नरेबल है कैविटेशन के लिए, वो जानने के लिए, मतलब कितना हाइट पे हम रख सकते हैं, मैक्सिमम अलाउ कर सकते हैं. उससे ज्यादा चल जाएगा तो वेपर प्रेशर से कम हो जाएगा. ऐसा क्यों? हेड बढ़ाने से क्यों हो जाएगा सर? सर बिकॉज हम लोग जो डेटा हेड बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर कम हो जाएगा. वेलोसिटी तो सेम क्रॉस सेक्शन है तो वेलोसिटी सेम ही रहेगा, तो प्रेशर घट जाएगा. इसीलिए अच्छा,
मेरे को आप बता सकते हैं ड्रैग फोर्स और थ्रस्ट फोर्स में क्या डिफरेंस है? थ्रस्ट में तो मोमेंटम चेंज होने की वजह से, ड्रैग ड्रैग बेसिकली प्रेशर और मतलब फ्लोइंग फ्लूइड का है। ड्रैग दोनों मतलब प्रेशर ड्रैग भी हो सकता है और स्टीम ड्रैग भी हो सकता है। फ्लूइड में हम ड्रैग फोर्स निकालते कैसे हैं? फॉर्मूला, हाँ, so SP is equal to CD into half rho AP square. FD is equal to CD coefficient of drag into half rho AP square. okay. And this is for laminar flow or turbulent flow? So any flow that we can use that. It CD can will be turbulent and laminar both, huh? yes. CD will change actually for both. बट देन ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी तो नहीं लगा सकते टर्बुलेंट फ्लो के लिए? No sir. Reynolds का टर्बुलेंट फ्लो के लिए हम क्या करते हैं फिर? टर्बुलेंट फ्लो का तो CD चेंज हो जाएगा, मतलब ड्रैग के बारे में बता रहे हैं आप? Fluctuating velocities, do you know what is the meaning of that? Fluctuating velocities? Yes yes. Yeah, can you define that? मतलब मीन वेलोसिटी से जो मतलब चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम, उसी को फ्लक्चुएटिंग वेलोसिटी रहता है। टर्बुलेंट फ्लो में स्टेडी फ्लो है, इसलिए सेम वेलोसिटी नहीं रहता। अच्छा, आप मेरे को कैन यू ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन ड्रैग स्ट्रेस और shear stress and rate of shear strain? Sir, for which type of flow? Newtonian all to do. Newtonian. Yes. Done. Okay, now can you tell me what is the relation between tau and du by dy for turbulent flow? Can you draw the graph between these two for turbulent flow now? This is for laminar or turbulent? Sir, this is actually for Newtonian flow. It is not Newtonian कौन सा measurement. होता है? Turbulent होता है कि laminar होता है? सर वो तो दोनों ही हो सकता है, मतलब नहीं, क्योंकि न्यूटोनियन फ्लूइड में ये जो म्यू है इसका स्लोप क्या है? इसका म्यू है। क्या होता है म्यू? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो अगर विस्कोसिटी है तो विस्कस फ्लो क्या होता है? विस्कस फ्लूइड लैमिनर होता है कि टर्बुलेंट होता है? लैमिनर। टर्बुलेंट में तो सर मतलब म्यू भी आता है और एडिस कोएफिशिएंट दोनों ही आता है। हाँ, which one is more significant? There eddies is more significant. Yes. So when we say viscous flow, that is actually laminar flow. And when Newtonian law was used, it said constant of proportionality is coefficient of viscosity. Yes. That is how it goes, right? So now my question is, what if it is turbulent flow? How shall you draw the graph? Tau versus rate of shear strength. Yes. So here slope will be other thing actually, other than viscosity of eddies viscosity will be there. No, I'm not asking about viscosity. I'm saying what is the relation between tau and du by dy for turbulent flow? Can I say tau is proportional to du by dy square? Oh, sorry, I don't know. So you're not done that? Turbulent part I am not comfortable with. Okay, you're not done turbulent part. But do you know turbulent part comes more
I mean actual में turbulent part तो ज्यादा होता है. There is a real fluid, you know, flow. Yes, yes. Okay, you know what is the Reynolds number? Yes, sir. It is the ratio of inertial flow by viscous flow. For a pipe flow, can you tell me the formula? Rho Vd by mu. Now, suppose I increase the density of the fluid. What will happen to its Reynolds number? सर डेंसिटी चेंज करने से तो सर म्यू भी चेंज हो जाएगा, तो बताओ, आंसर दो. If I increase the density, what will happen to Reynolds number? It will remain same. Sorry? मैंने वाटर लिया, उसके अंदर सॉल्ट डालता गया, सॉल्ट. Yes. And I'm increasing its density. What will happen to Reynolds number? कम हो जाएगा, सेम रहेगा. सेम रहेगा, श्योर? I'm not sure. Think. सर म्यू भी चेंज होगा, रो भी चेंज होगा, दोनों ही चेंज होगा. I understand that, but what will happen to Reynolds number? It will become more laminar, I guess. So that means Reynolds number decrease. Yes. Why? The viscous force is dominating more. What will happen to kinematic viscosity? So it will depend upon mu by rho. What will happen to that? Mu ज्यादा चेंज होगा तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी बढ़ जाएगा, और रो ज्यादा चेंज होगा तो काइनेमेटिक वो कम हो जाएगा. So I'm not sure actually which one. Okay, Hein, let me give you the feedback. See, in BARC, the kind of questions they will ask you will always be thought-provoking. They will force you to think, and you should not hesitate in thinking. You should think a lot. जैसे भी ये क्वेश्चन मैंने पूछा था, रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला इज रो डीवी बाय न्यू, तो एक फॉर्मूला है उसमें डायनामिक विस्कोसिटी आता है, राइट? एक डीवी बाय न्यू आता है जिसमें काइनेमेटिक विस्कोसिटी आता है. So if you increase density, dynamic viscosity also changes, and dynamic viscosity changes more. So kinematic viscosity keep on increasing. The ratio of dynamic viscosity and density. So it so happens that dynamic viscosity increases more because of intermolecular attraction, and hence Reynolds number decreases, flow becomes more laminar. Some students say when you increase density, the Reynolds number also increases. That means flow becomes turbulent. That is wrong. And then turbulent flow में tau is proportional to second power of du by dy. For that you need to go for mixing length hypothesis, parental equation, and all those things, right? Yes. Fluid mechanics का marathon video एक बार सुनो. All these questions which I asked you were from there only. Okay. That will help you. That will save you in basics. So that is 5-6 hours का वीडियो है ना एक पड़ा हुआ. Yes, yes. उससे तुम्हारा बेसिक्स ठीक हो जाएगा. सर बेसिक्स में गलती नहीं करेगा. सर मशीन पढ़ना पड़ेगा क्या सिविल वालों के लिए? मशीन, लेकिन नेट पॉजिटिव सेक्शन हेड पंप तो पढ़ना पड़ेगा. सिविल वालों के लिए जरूरी है. पंप तो सिविल वाला पढ़ता है ना. Yes, जो sir, पंप yes. है सिविल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. पंप, Okay. पंप, कैविटेशन, नेट पॉजिटिव सेक्शन हेड. मैंने टरबाइन पूछा ही नहीं आपसे. पंप तो तुम लोग डील करते हो ना, पंप से ही तो डील करते हो सिविल इंजीनियर्स. Yes, yes. Okay. कैविटेशन होता है, पंप खराब हो जाता है, नेट पॉजिटिव सेक्शन हेड. ये इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारा सिविल में. Yes. डिस्चार्ज, ये चीज Okay. जो क्वेश्चन तुमसे पूछा गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सिविल के लिए, राइट? सो this is how you have to proceed forward for this particular thing. So whatever question I asked, just see that. And approach is very important. The kind of questions, how you approach, right? I asked you to think like vortex flow, and then where do you see that flow? Radial inward, radially outward,
That is nothing but fluid machinery, pump and turbine Yes, and all. sir. So you need to visualize, you need to think and then answer. Right, Ayan? Okay, okay. But I advise you strength of material and fluid mechanics. Marathon video, please see that. That will largely solve your problem. फॉर्म का सर मैं देख चुका हूँ. हाँ? फॉर्म का मैं खत्म कर चुका हूँ. वो फ्लूइड फ्लूइड का मैकेनिक्स पूरा भी नहीं देख लो. हुआ. फ्लूइड का भी पूरा देख लो BARC से पहले. ये 2 का तो देख लो. ओके डन? ओके सर.